हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू कैन सी मी प्रॉपर्ली। So this is a class regarding immunology, या you can say immune system या immunology की क्लास है। So यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, और immunology की जो क्लास है इसमें हम लोग कुछ पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि पार्ट बाय पार्ट आप लोग डिटेल में इसको समझ पाए। ठीक है, आज का पहला जो पार्ट है इम्यून सिस्टम, उसके सेल और एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो आप लोग इतने से सुनिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जो है लगातार यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं, और उसके जो आंसर है मैं यहाँ पे देता जाऊंगा। ठीक है, तो आप जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके क्वेरी है, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। Voice is not proper. Voice is not proper. Can you can you hear my voice? Can you hear my voice now? It's okay. Voice clear है सबको? Now okay. ओके, सो हम शुरू करते हैं। सो जो मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ पार्ट बाय पार्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके डाउट है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, क्या आपका क्वेरी है। सो रिगार्डिंग योर क्वेरी you can ask me what's your query is. Okay, so हम लोग यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया है। सो वॉइस ब्रेक नहीं है। इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोग को आई होप बेसिक आइडिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बात जो करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मेरे प्रोफाइल है आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, बफरिंग अगर हो रहा है तो वो नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं है? वॉइस इज नॉट क्लियर। बफरिंग, एक सेकेंड। ओके, क्लियर नहीं है? वॉइस इज नॉट क्लियर। सो आपको आपको जो मेरे प्रोफाइल है यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे। सो ऑब्वियसली आप लोग पहले देख चुके हैं। और जो लोग न्यू है क्लास में, मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे डेफिनेटली जो मेरे चैनल है यहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, और ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो इम्यून सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी है इम्यून सिस्टम का, उसको बोलते हैं द इम्यूनिटी व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय बर्थ।
ठीक है, उसको बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, सो इनेट इम्यूनिटी is the first type of immunity, okay, so which you will get by birth। तो आपको ऑब्वियसली जन्म से ही जो इम्यूनिटी आपको मिलता है, जो आपको प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी, राइट। तो इनेट इम्यूनिटी के जो यहाँ पे हम लोग हर एक जो इम्यूनिटी है उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या 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 कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, क्या कंपोनेंट है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी नेटवर्क इशू है इसके दौरान, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने जो स्ट्रीम है उसके बाद रिफ्रेश कर लीजिए या फिर इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको सही से दिखे। सो दिस इज गिवन बाय बर्थ, ठीक है। तो जन्म से जो इम्यूनिटी आपको मिलता है वो है इनेट इम्यूनिटी। तो इस इनेट इम्यूनिटी में या इनेट इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज शामिल है। सो आपको मैं एक चीज बताऊं कि जस्ट लाइक आवर डिफेंस सिस्टम, for example in our country, so in our body also there are several defense system or defense mechanisms or some barriers, okay। so इसमें एक होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दैट इज like the mechanical barrier which are present in our body, ठीक है, उसको हम बोलते हैं first line of defense, okay। the first line of defense is a mechanical barrier which is present in our body, for example our impermeable skin is the first line of defense in our body, okay, and that is a part of our innate immune system, okay, that will provide innate immunity to us, okay, and as well as the mucous membrane which is present inside the mouth, okay, inside the mucous membrane also present in the lining of GI tract, that means gastrointestinal tract के जो लाइनिंग है उसमें भी आपको म्यूकस लाइनिंग या म्यूकस कवरिंग मिलता है, ठीक है। तो वो भी एक इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट है जो कि इनेट इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा जो कुछ केमिकल बैरियर होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक पार्ट में आपको देखने को मिलता है, जस्ट लाइक एसिडिक पीएच ऑफ स्किन एंड स्टमक। सो स्किन एंड स्टमक में जो एसिडिक पीएच है, those components for some extent they can restrict the pathogens, okay, from entering into our body। so these are the first line of defense we can say। and ये जो है ये आपके innate immunity ये आपको by birth मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, innate immune system। ओके, सो इसके बाद तो इनेट इम्यूनिटी आई होप आप लोग समझ गए। इसके बाद जो आते हैं इनेट इम्यूनिटी के और भी कुछ यहाँ पे पार्ट है और भी कुछ कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट द फर्स्ट कंपोनेंट which are actually complement proteins। so complement system present in our body जिसके बारे में हम लोग आगे complement system के पोर्शन में पढ़ेंगे। so complement system is present in our body, तो there are several components of complement system, उसको हम बोलेंगे complement proteins। तो complement proteins are those proteins which are specific for some kind of larger pathogens, for example bacteria, okay। तो उसके लिए जो प्रोटीन जो कंपोनेंट शामिल होते हैं, जो कंपोनेंट रहते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। एंड इसके अलावा हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट्स है। इसके अलावा जो और भी जो इम्यूनिटी हमें मिलता है और जो इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, इम्यून सिस्टम के जो पार्ट है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट दोज आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है।
So sound is problematic for you. Sound is not clear for you. Just wait. देखता हूँ what I can do. Just wait for some time. Sound is not clear. Sound is not clear for you. Now okay. So देखिए साउंड का प्रॉब्लम अगर है सो दैट्स बिकॉज नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से, और कोई कारण नहीं इसका। ठीक है, इसका और कोई कारण नहीं कि साउंड में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, इसका कारण नहीं है। ओके, सो नाउ आई होप नाउ ओके एवरीथिंग, आई होप नाउ एवरीथिंग इज ओके। ओके, सो लेट्स रिज्यूम दिस थिंग। सो देखिए, सो इम्यून सेल्स जो है, ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो भी इनेट इम्यूनिटी के ही पार्ट है। ओके ओके, सो वो इनेट इम्यूनिटी के ही पार्ट है, जिसमें एग्जांपल है न्यूट्रोफिल, ओके, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये सेल एंड एलिमेंट्स के पार्ट वन है, तो ऑब्वियसली इन सेल्स के बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक आई होप आपको समझ आ रहा है कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, और ये कंपोनेंट किस तरह के फंक्शन करेंगे वो भी हम अभी देखेंगे। ओके, सो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। ओके, और इनेट इम्यूनिटी वी कैन से। ओके, सो देखिए, सो द प्रोसेसेस प्रोवाइडिंग द इनेट इम्यूनिटी। तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस, ऐसे मैकेनिज्म आपको इनेट इम्यूनिटी में, जो इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, ये आपको जानना है। कभी कभी ऐसा होता है, जो आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिलता है, कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी एक मैकेनिज्म को दे देते हैं आपको, और आपसे पूछा जाता है कि ये इसमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, इसमें से कौन सा एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट है, जो कि इसका दूसरा पार्ट आएगा एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसका पार्ट है। तो अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में आप नहीं आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो मोनोसाइट इन ब्लड, यस यस, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मोनोस आपने सही बोला कि मोनोसाइट जो है वो ब्लड में, एंड मैक्रोफेजेस जो है वो टिश्यू में। तो एक्चुअली मोनोसाइट भी एक तरह का मैक्रोफेज ही है, लेकिन वो जब ब्लड में रहते हैं उसको हम मोनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और जब वो टिश्यू में चले जाते हैं, तो उसमें जो मतलब कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, जो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन कैन से, उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके लिए आप इसको फॉलो कीजिए। सो देखिए, सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस विच विल प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। सो सबसे जो मेजर प्रोसेसेस है इनेट इम्यूनिटी के, उसमें एक पहला आता है इन्फ्लामेशन, जो बहुत ही कॉमन है इन्फ्लामेशन। इसके बाद फैगोसाइटोसिस, एंड लास्ट है ऑप्सोनाइजेशन। ओके, सो इन्फ्लामेशन, phagocytosis and opsonization, these are three important processes which are participating, which are there, which will provide innate immunity to our body. Okay, so ये जो है, ये लोग हैं वो innate immunity provide करेंगे। okay, so first of all inflammation, phagocytosis and then opsonization। okay, so if any problem is there with visibility, that's because of your network connectivity. There is no other issue, there is no other reason कि जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। स्लाइड विजिबल नहीं है तो उसका मतलब है इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ओके, सो इन्फ्लामेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लामेशन, व्हाट इज इन्फ्लामेशन? ओके, सो इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स against any internal or external injury. Okay, so inside our body, if we face
any kind of internal or external injury, okay, so that the response against that injury, internal or external, usko bolenge inflammation. And inflammation is not a single step process or single mechanism, okay, so it involves many steps, okay, and those steps you have to learn in our like upcoming sessions. You will learn those steps, okay. So for now, you know that the inflammation is nothing but a response against any external internal injury. The response prevents growth of the microorganism. So inflammation actually is good to some extent. To some extent, inflammation is actually good. Okay, so this response, if any inflammation is happening in your body, okay, so to some extent that is good, because the inflammation in that condition, like it will fight against those microorganisms. It will fight the microorganisms and like help our body healthy. Okay, so the response is nothing but the fight against microorganism, and for that the response which will be generated is known as inflammation. Okay, so this is the first type, inflammation. Okay, next, phagocytosis. So phagocytosis is what? So this is a simple, in a simple term, this is known as cellular eating. Okay, so these cells, as you know, but not like our normal cells, okay, our healthy cells, or healthy any kind of cell inside our body, if it will face the phagocytosis, that is not good for our body, okay, because those are our own cells. But if the cells are microorganisms, if the cells are foreign cells, okay, the foreign body or foreign component, okay, that is in that case, if phagocytosis will be there, phagocytosis will be happening, that is actually good. Okay, so is the cellular eating, okay, but for the microorganism, for the foreign body, that is good. So microorganisms and useless cells, not only microorganisms, also the useless cells, those are not helpful in our body, inside our body, okay, those cells which will be not performing any function, okay, so those cells will also be phagocytosed, we can say phagocytosed by, are being engulfed and cleared. Exactly, from our body, they will be engulfed and they will be cleared as well. Okay, so examples of phagocytic cells are, this is very important part. Okay, so you have to remember this thing. Okay, so you will get connection in our like in our upcoming sessions जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, so उसमें आप इसका कनेक्शन आप establish कर सकते हैं कि phagocytic cells जो है ये क्या है. So examples of phagocytic cells are neutrophils, macrophages, and monocytes. So these are the major phagocytes or phagocytic cells, we can say neutrophils, macrophages, and monocytes. तो ये जो examples है, आपको ये examples याद रखने पड़ेंगे. So you have to remember the examples. Okay, so now the third process, the phagocytosis and inflammation, we have already covered. The third process, that is opsonization. Okay, so opsonization is also a specialized procedure. Okay, and in this procedure, some proteins will be there. The name of those proteins are opsonin protein, and opsonin protein. Okay, so I will give like detailed explanation, detailed illustration to you in our next class. Okay, in our next class I will give detailed illustration of these things. So opsonization, that is governed by opsonin protein, interacts with microorganism. It has a capacity. They have a capacity so to interact directly with microorganisms. Okay, so this opsonization is very, that's why it is very specialized. Okay, so the interaction of the interaction of opsonin protein with microorganism makes the microorganism more susceptible for phagocytosis. So phagocytosis will also there. Phagocytosis will be happening afterwards, but before that opsonin protein like will those have to opsonin proteins will have to interact with the microorganism first.
So, okay, so and make those microorganisms more susceptible for phagocytosis. The phagocytes like neutrophils, macrophages, monocytes, they will come afterwards. Okay, but opsonine is actually like make those more susceptible, make the process easier. Okay, so now the other part is adaptive immunity. So yeah, here some part like maybe here by covered by my picture here. Okay, so that may be covered, but I will write those things. Okay, I'll write those things in the slide, which you will like unable to see, you are not seeing properly, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं ऊपर लिख दूंगा जो आप नहीं देख पा रहे, जो अगर कवर हो गया है मेरे जो स्क्रीनशॉट है उससे. ठीक है, सो देखिए, so adaptive, now the next part is adaptive immunity. So this is another component. Okay, so innate immunity is innate immunity is one part. This is another part. So adaptive immunity, what is this immunity? Okay, so what kind of immunity is this? So it is a specific response generated against antigens which are recognized by immune cells. So these are we can say more advanced process or more advanced systematic approach, systematic response. Okay, than innate immunity. So innate immunity already you have it. Okay, but adaptive immunity you will generate. Okay, you will adapt this immunity inside your body after antigen is here, antigen is in your body, in anybody's body. So the if the antigens are present, okay, so they are directly recognized by our immune cells. That is natural, that is necessary. Okay, if it is not working, that means there are some problems inside our immune system, inside our immune cells, in the immune cells. That means there are problem. But if it is completely normal, that is good. So immune cells which participate, immune cells which participate in the adaptive immunity or adaptive immune response, we can say, those are the cells, those are very very important cells, and you know these cells of high importance. This is B lymphocytes, T lymphocytes, and antigen presenting cells. So these are the major controller or major role player, we can say major role player of adaptive immunity or this kind of immune system immune response. B lymphocytes, T lymphocytes, and antigen presenting cells. तो इनके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये और कैसे काम करता है, किसमें काम करता है. So types of adaptive, now we'll move to the next part. Types of adaptive of acquired immunity. So इसके जो राइट साइड वाला पोर्शन है शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं लिख दूंगा. राइट साइड का जो पोर्शन है, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है आपको शायद वो दिख रहा है. ओके, सो टाइप्स ऑफ एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो देखिए ये किस टाइप के है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइडेड होंगे, किसी भी इंसान को प्रोवाइडेड होंगे, मिलेंगे. ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ है कि नहीं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि इम्यून सिस्टम इज इटसेल्फ एक्टिवेटेड और नॉट. इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एडेप्टिव इम्यूनिटी किस टाइप के होगी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक बहुत ही खास बात आ जाती है कि हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो है इसका. एक होगा जब इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, एंड दूसरा कंडीशन जो राइट साइड में है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो. जो राइट साइड में यहाँ पे है इसका नेक्स्ट पार्ट, मैं आपको एरो देके मैं लिख रहा हूं, दैट इज नो एक्टिवेशन. राइट साइड इज नो एक्टिवेशन but only antibodies are present. Only antibodies are present, but no activation. So there are two sides of adaptive immunity to according to like with respect to the like types. Okay, type के हिसाब से. So अगर immune system active होता है ना, अगर immune system active होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव. उसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड immunity और active adaptive immunity. So understand this, please understand this कि जब एक्टिव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. But if there is no activation, only antibodies,
सो वी कैन से दैट इज पैसिव एडेप्टिव, दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे पैसिव एडेप्टिव और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. गॉट इट? सो देयर आर टू पार्ट्स. I hope you can understand this. You have already understood this part. So देखिए, so active, अभी active adaptive जो immunity है वो भी दो तरह के होते हैं. Okay, so it is also, it consists of, like it is of two types. Okay, another one is natural, another one is artificial. Okay, so we can say natural active इम्यूनिटी जो कि एडेप्टिव का ही पार्ट है, और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. तो नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव both are adaptive, both are the type of adaptive immunity or acquired immunity. This is not a part of innate immunity. Okay, so natural active and artificial active. And now other part, जिसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो पैसिव है. तो पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप के होते हैं. पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप के होते हैं. एक को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल और दूसरा है नेचुरल. उसमें भी है आर्टिफिशियल और उसमें भी है नेचुरल. मैं अब लिख रहा हूं, देखिए इसमें है, ये भी आप दो तरह के इसमें दो दो पार्ट्स को देख सकते हैं. एक है मतलब ये पैसिव है, पैसिव में इसका दो पार्ट है. ठीक है, एक है नेचुरल, एक है नेचुरल पैसिव और दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव. ओके, सो नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव. गॉट इट? सो क्लियर है? सो इसमें भी आप बोलेंगे ये जो है नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव, these are also a type of adaptive or acquired immunity, but the difference between active and passive is that the activation of immune system. Okay, got it? I hope you got it. Okay, so now we will see some examples regarding this. Okay, some examples we will see regarding this natural active or artificial active and natural passive and artificial passive. So what is this natural active scenario, when it will be happening, when it will be there? So when introduction of any foreign antigen activates specific immune system in the body. So it's a basic part. From the basic point of view, you can say, from the basic point of view, if you will see the introduction of any foreign antigen, just a second. Okay, so when introduction of any foreign antigen activates specific immune system, this is a basic thing, right? एंटीजन आ गया, एंटीजन बॉडी में आ गए और एक्टिवेट हो गया इम्यून रिस्पॉन्स, और एक्टिवेट हो गया एंटीजन एजी, मतलब एंटीजन इज एंटरिंग इनटू द बॉडी एंड इम्यून सिस्टम विल बी एक्टिव. तो इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव, बिकॉज आपको मैंने बोला कि इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव है. ठीक है, ओके, समझ आया? सो इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये एक्टिविटी है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्विफ्टली हो जाएगा. ओके, एंटीजन आ गया, एंटीजन इज एंटरिंग एंड द एक्टिवेशन इज स्मूथली डन. एंड देन अनदर वन, artificial active. That is natural and natural active. This is artificial active. This is also active, but this is artificially active. That means kaise, why this is happening? So it happens during vaccination. Okay, so like in our lifetime we will also it's already we experienced like vaccination for some extent, right? So vaccination, when we get vaccines, okay, when you got vaccines, so that actually that will active our immune system, but that is not in a natural way, that is in an artificial way. And this is actually adaptive or acquired immunity. So I hope you can understand this. This is adaptive or acquired immunity because we are acquiring it, we are somehow adapting it, right? So vaccination से जो आपको इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, इम्यून सिस्टम जो एक्टिव होता है वो है आर्टिफिशियल एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी. गॉट इट? सो इन द वैक्सीनेशन हीट किल्ड, क्या होता है वैक्सीनेशन में, क्या किया जाता है? हीट किल्ड और एटेन्यूएटेड स्ट्रेन जो कि लाइव है,
एक है हिट कील्ड, जो कि कील्ड है, जो कि कील्ड हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एक होता है कील्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कील्ड बाय हिट, उसको बोलेंगे हिट कील्ड, एंड दूसरा है एटेन्यूएटेड, दोज आर लाइव। Okay, those are live, but attenuated means the like pathogenic part is deleted or pathogenic part is removed. Okay, the pathogenic parts is somehow removed, but they have the property of antigenicity. Okay, so इसके बारे में आगे हम बात करेंगे antigenicity के बारे में। So they have the property of antigenicity. Okay, so but they cannot directly produce like pathogenicity. They don't produce pathogenicity, but they will help to activate our immune system. Okay, so they are attenuated. They are live strains of microorganisms. They are attenuated strains. And the other part, that is a hit. They are a hit kill. They are actually completely killed, but they can produce. They can active immune system. Okay, so these strains, either hit killed or attenuated or both of them, they can activate artificially our immune system, जिसको बोलेंगे artificial active adaptive immune system, adaptive immunity or artificial active acquired immunity. Got it? So immune response will be generated immensely, will smoothly, it will smoothly generated, the immune system will be smoothly activated, right? Got it? Okay. So next part. So this is active immunity, natural active or artificial active. Okay, so now the next part, natural passive. Okay, so natural passive and artificial passive. This is a passive immunity, right? This is not active, this is passive, because immune system is not activated by default, but the antibodies are there. Got the point? Antibodies are there. So this that is passive. So देखिए, ये आप ऑब्वियसली जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना है। तो ट्रांसफर जो नेचुरल पैसिव है, इन केस ऑफ नेचुरल पैसिव, so transfer of immunoglobulin G, IgG, from mother to fetus. तो जो फीटस, मदर से जो फीटस में एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होते हैं, वो आईजीजी होता है, ये आप जानते हैं शायद। सो आईजीजी, so that will traverse placenta, right? वो प्लेसेंटा को वो क्रॉस कर सकता है, that will cross or traverse placenta. Okay, so transfer of IgG from mother to fetus, so that will be actually the component of producing natural passive immunity or natural passive acquired or adaptive immunity, we can say. Okay, and the another part, the antibodies will be provided from secretions. ओके, तो सिक्रीशंस, जो भी सिक्रीशन है, उसमें जो एंटीबॉडी होते हैं, आप जानते हैं क्या, कौन सा एंटीबॉडी है, दैट इज आईजीए. So IgA antibody or immunoglobulin, those are present. The IgA is present in the secretions, external secretions. Like for example, mother's milk. Mother's milk is the source. Mother's milk is a source to for providing immunity to a newborn baby, right? एक न्यूबॉर्न बेबी को अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना है, तो वो मदर्स मिल्क से ही हो सकता है कि ये एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली न्यूबॉर्न बेबी में जा रहा है, राइट? सो द न्यूबॉर्न बेबी विल गेट IgA or immunoglobulin A directly from mother's milk. Okay, so this is the secretory immunoglobulin or secretory antibody. So by these two process, by the transfer of in the transfer process of IgG, in the transfer process of IgA, so natural passive immunity will be generated. Natural passive immunity you will get or anybody will get. ओके, सो दिस इज नेचुरली पैसिव. नेचुरल और पैसिव क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन के बारे में कुछ बात नहीं किया गया. जस्ट एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ our immune system, right? And they will participate in a certain way by for the protection of our body. Okay, so the another one is artificial passive. So this is passive but artificially passive. Okay, so what
What is the main point behind the passive immunity? Is antibody. So those are which we have already discussed. Already we have seen that these are natural antibodies like IgG or IgA. But what happened if we administered from outside any kind of antibody we will administer? So in that, what will happen in that case? So that in that case also immunity will be provided to a person, right? Immunity will be provided to a person, but that is not through natural antibody. Okay, so those kind of antibodies, we know the names of the antibody, monoclonal antibody. So मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये डेफिनेटली एक एंटीबॉडी है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, राइट? इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, इम्यून सिस्टम के लिए मतलब जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट में काम कर सकता है। लेकिन अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर आप प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट मींस यू विल प्रोवाइड artificial passive immunity to a person. Got it? So you will provide artificial passive immunity to a person if you provide monoclonal antibody. Okay? समझ आया सबको? देखिए हमने आज जो बात किया वो इम्यूनिटी के डिफरेंट डिफरेंट इम्यून सिस्टम के पार्ट और डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी उसके जो क्या क्या कंपोनेंट इसके बारे में बात किया। दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन है और हमें पता चला कि किस तरह से क्या मतलब ये जो लाइव यहाँ पे जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रोस कॉन्स है, आप लोग समझ पाए, राइट? तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे अगले अगले सेशन से, ठीक है? इसके बारे में जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बता दूंगा, जो भी सेल्स है जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में और भी डिटेल में बात होगी। सो आई होप यू लाइक्ड टुडेज सेशन, ठीक है? इफ यू लाइक दिस सेशन सो प्लीज आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी मतलब आपको कोई भी चीज अगर आपका आपका रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी क्लास, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं इसके नीचे। और साथ साथ मैंने वहाँ पे देखिए मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हैं और मुझसे आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है? तो आप वहाँ पे जो टेलीग्राम लिंक है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज लाइक प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क योर डाउट। ओके, इसमें क्या द क्वेश्चन इज इसमें क्या एंटीबॉडीज हमेशा प्रेजेंट रहेगा? Yes, yes. Antibodies are transferred. Antibodies can be transferred. Okay, Nitesh. Antibodies can be transferred. Antibodies are present. मदर में एंटीबॉडीज है और वो एंटीबॉडीज फीटस में या न्यूबॉर्न बेबी को मिल रहा है। सो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, यस। But in the artificial process, you will from outside you will administer those antibody. Okay, you will administer the antibody to a patient or a person. Okay, so antibodies are present actually. Okay, so thank you so much, thank you for joining everybody. If any doubt arises afterwards, you can simply ask me. यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? साथ साथ आपको अगर ऑब्वियसली इंटरेक्ट करना है और आगे आपको जानना है कि क्या क्लास है, कैसे आ रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। और साथ साथ यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे प्लीज चेक दैट लिंक। ओके, so we'll meet in our next session. Okay, thank you so much, thank you for joining everybody. I hope you like the session. Okay, thank you so much.